the next question, which of the following is a list of important events in organic evolution? So important events in organic evolution is the first appearance of fishes. So first appearance was a fish, then first appearance of mammals. उसके बाद mammals आया था first, and then so first fishes, then mammals, then first appearance of birds, then first appearance of flowering plants. So our answer is A. So fish is a fish, then fish, then mammals, and then birds, then FMBF, FMBF. You can remember it. So next question, which of the 55, so which of the following river patterns is more common in the Precambrian succession? So which of the following river pattern is the more common in the Precambrian succession? So it is mainly braided pattern is the answer. Meandering knot, Precambrian time, meandering anastoming knot, and straight knot, mainly braided pattern, Precambrian succession. So next 86, in which of the following conditions relative to sea level rises? कौन condition जो sea level को rise कर देंगे relatively? So eustatic sea level is falling and basin floor is subsiding at the faster rate. So eustatic sea level change, okay, sea level falling eustatically, and basin floor is subsiding at a faster rate. So please remember, relative sea level change rises because eustatic sea level is falling and basin floor is subsiding at a faster rate. So option B is the correct answer. So we want to next question, because we discuss mainly important questions, so please remember. So now we come to here. So identify the sand dunes forms that are likely to develop. So here you can see 4 points A, B, C, D. A, here is sand supply is in the left side and right side wind strength, and and the lower side it is vegetation cover. So vegetation cover, sand supply, and wind strength. So the common relation between them. So you can see, and how to develop sand dunes. Sand dunes, when we mainly here first is the longitudinal forms. It is correct. Longitudinal form, longitudinal sand dunes, correct. Second is the transverse, because sand supply and vegetation cover, you can see sand supply increase, and the first is the longitudinal, because sand supply move and wind strength high. So you can see and see the parabolic. And there is the no dunes, and there is no dunes because there have not wind and vegetation cover now just only, so no dunes forms. So it is the correct answer. D is the correct. Sorry, A is the one is the correct answer. So if you remember that the D is not from no dunes, so then you can give the answer. One is the actual answer. So please in the option actually. So you can master it. It is one of the important simple question, I think. Next question 89. So unpaired non-cyclic river terraces are not associated with.
So unpaired non-cyclic river terrace is not associated with. So unpaired and non-cyclic river terrace. So cyclic not, it is non-cyclic river terrace are not associated, नहीं होते हैं, उसका डिपेंड नहीं करते हैं, तो इट इज़ अ नेगेटिव. वन इज द आंसर. नेगेटिव चेंज इन बेस लेवल अगर नेगेटिवली चेंज हो रहा है. एंड माइग्रेटिंग मेंडरिंग चैनल, अगर मेंडरिंग चैनल माइग्रेट करते हैं तो उस टाइम नॉन साइक्लिक रिवर टेरेस नहीं होगा. अनपेड नॉन साइक्लिक रिवर टेरेस नहीं फॉर्म होगा. अगर नेगेटिव सी लेवल चेंज हो रहा है, बेस लेवल चेंज हो रहा है, और माइग्रेटिंग मेंडरिंग चैनल भी माइग्रेट कर रहा है. And next question. So 90. The diagram you can see. The diagram below show the influence of three types of cap rocks on cliffs in arid regions. Identify the correct answer. So here you can see mainly A is the debris here given, B debris, C debris. So but the debris increase now slowly, A to C. So here in the vision 3, option 3, then it is the correct option 3. A is mainly resistant and thicker cap rock, it is correct. Thicker cap rock. B resistant and thin cap rock, thin. And C is the weak cap rock. So option 3 is the correct. So you can see in the answer. So the resistant and thicker cap rock, it is correct all the time. Then B is the resistant and thin cap rock, then weak cap rock. So option 3 is the correct. Next. हाँ, ऑप्शन ए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा. आइडेंटिफाई द क्लास्टिक मटेरियल. Identify the clastic material on the basis of grain size distribution of some samples from different environments. You can see in 256 meter, 2 meter grain size and 1/2 156 grain meter. Okay, so here you see the option. So option 3 is the correct होगा. Mainly A is the single beach, B is the sandy river channel, and C is the dune sand, D is the lowest. Mainly you can see in the figure. So here D is the lowest. Because 1/256 means it is मतलब ये बहुत ही छोटा होगा amount. So here ये तो lowest ही होगा, lowest. तो lowest आप देख लिए तो आंसर मिल जाएगा. जस्ट आप कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि वो तो लोएस्ट ही होगा. लेकिन देखिए डी का ऑप्शन देखिए, सिंगल बीच नहीं होगा, ये सैंडी रिवर्स चैनल भी नहीं होगा, ट्यून सैंड भी नहीं होगा, तो ये ओनली होगा लोएस्ट. तो डी सी इज आंसर हो जाएगा. 1/256 मतलब बहुत ही छोटा होता है. 2 मिलीमीटर जो दिया हुआ है बी में, तो वो तो नहीं होगा सैंड, मतलब जो लोएस्ट, तो वो होगा सैंडी रिवर चैनल. उसके बाद ड्यून सैंड, देन लोएस्ट. नेक्स्ट 92. In the table given below, so in the table given below, identify the correct pair. Sorry, so identify the correct pair. So here ऑप्शन देख लीजिए. ओशनिक डाइवर्जेंट सान आंद्रेस फॉल्ट दिया हुआ है, नहीं होगा वे. एंड कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट, इसका हिमालय दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा आई थिंक. हाँ, ये भी नहीं होगा. ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, हिमेड एटलांटिक रीज, ये भी नहीं होगा. कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ये भी नहीं होगा.
और ट्रांसफॉर्म एंड दिस, ये तो नहीं होगा, तो आपको मिलाना है। अब देखिए, अब जो है ओशनिक डाइवर्जेंट है वो उसको उसको बोल उसका अगर देखा जाए वो वही हो रहा है, क्योंकि मिड अटलांटिक रेज होता है जब ओशनिक जो प्लेट जो बहुत जो डाइवर्ज करते हैं, मतलब एक प्लेट और एक प्लेट से दूर में जाते हैं, तो उस टाइम जो जो लैंड फॉर्म करते हैं तो वो होगा मिड अटलांटिक रेज, तो ए इज द एज। देन वी कट टू ऑप्शन 2 and 4 वी कटिंग, एंड हम काट देंगे 2 and 4 को, एंड 1 and 3 के अंदर होगा आंसर। तो देन देखेंगे कॉन्टिनेंटल का डाइवर्जेंट जो होगा उसमें ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट होगा, लेकिन आंधी से नहीं होगा। तो कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट होगा वो होगा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, एंड सी का जो होगा ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस वो होगा आंधीज। देन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस ये होगा हिमालय। ओके, if we find D is the continent convergence mainly Himalaya, then you can cut the 3, so only 1 is the correct answer, and transform is mainly San Andreas fault. Okay, so you can see the easily you can give the answer. So to mainly you can find and give answer these two answer, mainly 91 and 92, it is simply a question answer. So next we find another question. So thank you.